अली कॉन्फिडेंस जो है ना वो आवाज से पता चलता है और जो एरोगेंस होती है वो इंसान की नजर से पता चलता है। राइट, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग हैं ना वो शोर नहीं मचाते, उनकी प्रेजेंस बोलती है, राइट। एरोगेंट लोग हर वक्त माइक लेके घूमते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ, मतलब हर वक्त ये तो सिर्फ अभी है ना, फिर ठीक है। राइट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब नेक्स्ट किया, जहां हम माइंडसेट, कल्चर और जिंदगी की प्लॉट ट्विस्ट को लेके आप सब तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है ना वो दैट इज कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस एंड वेयर इज द थिन लाइन बिटवीन बोथ दीज। तो बात ये कि कभी कभी हम लोगों को खुद भी नहीं पता चलता कि हम वी नॉट श्योर वेदर दिस इज कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ बिलीफ है या ये ईगो ट्रिप। क्या है? देखिए, बात क्या है कि ईगो ट्रिप अक्सर होती है, राइट। और हम इस एपिसोड में यही एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी ईगो ट्रिप कहाँ पे शुरू होती है और वो कॉन्फिडेंस कहाँ खत्म हो गई होती है, राइट। This is going to be fun and interesting. यस, सो अच्छा, मुझे इससे ना याद आया, अली पता पहली दफा जब when I got to be the keynote speaker, like the first speech in a public event that I got to make, and this is where you have all top notch elite of the elite trainers and coaches and management people and whatnot, like पूरा कराची का corporate sector बैठा हुआ है, and I had to make a keynote speaker, and the idea in my head was I have to be the smartest person in the room. Okay? That is the approach that I had, and I walked on the stage doing that. I don't want to tell you what happened later, but just the idea of walking in that way, right, was quite something. So basically वैल्यू देने के बजाय आप अप्रूवल लेना शुरू हो गए। बिल्कुल आप कह सकते हैं। Right. आप सही कह रहे हैं। See, that's why I love this, because we don't really care about ratings. Yeah. No, sorry, we do care about your likes and shares. Mind नहीं कीजिएगा, but we do this because we love this so much. Agreed. The other thing that I realized was that I wasn't grounded. It was more about performance, and it was about making an impact, but not in a positive way. It was to be known, to be seen. और वो लोग एक I had a client like that. बातें बहुत like very polished, very chic kind of वो, but sort of like बनावटी, devoid of any emotion. मतलब उसकी बात अच्छा हुआ क्या? Yeah. Right? खोखला सा ना? खोखला सा, yes. Exactly. अच्छा, तो क्योंकि हम इस मौजू पे बात कर ही रहे हैं ना, तो अभी तो कुछ मिथ्स जो है उसको बर्स्ट करते हैं। Okay. ठीक है? I got one for you. Okay. Confident लोग हमेशा बोलते हैं। Not necessary. Confidence does not always speak. कभी-कभी जो है ना इंसान की खामोशी उसके आवाज और शोर से ज्यादा लाउड होती है। Right. True confidence जो है ना वो nervous system को regulate करता है। Yeah. Right? Yeah. You don't need to dominate. You just exist peacefully. Exactly. नातिक लखनवी एक शायर है। इरशाद. Right? उनका एक बड़ा अच्छा शेर है, and I hope, and I've written it down because I'm, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जबरदस्त। Right? So बात वही है कि you don't have to make a lot of noise. You just have to be present. Agreed. Grounded, present. Exactly. Impactful. अच्छा, दूसरा चलो मिथ ब्रेक करते हैं। ठीक है। Islam wants you to shrink. Not really. Islam wants us to be soft, humble, right? Not silent or invisible, right? But presence बोलनी चाहिए, right? And Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Quran says, "Man kana
युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, right? Whosoever desires honor, power and glory, then to Allah belongs all our honor, power and glory, right? So firm रहें, अपनी एक एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी रखें, इंफीरियरिटी ना रखें, right? But एक स्पिरिचुअल डिग्निटी के साथ, right? ब्रैश एरोगेंस नहीं होना चाहिए. That is very important. Right. So what we're trying to say is कि own your light, लेकिन spotlight की addiction से जरा दूर रहे कि बस मैं ही मैं हूँ हर तरफ. Exactly. अपना मैं जो है ना वो मार दे. हाँ मतलब ज़्यादा मैं ना करें. Exactly. All right. So another myth for you. Arrogance is power. अच्छा पावर को लेके ना इतना मिसकंसेप्शन है. पावर से आपको दूसरों की जिंदगी अजीरन करने का हक नहीं होता. पावर इज व्हेन पीपल अराउंड यू दे ग्रो, नॉट श्रिंक. You know, शैतान भी इबादत का एक एपिटोम था ना. Like he was known for his वो कि भाई यार उस जैसी इबादत कोई नहीं करता, इसीलिए वो एंजल्स के साथ था. Yeah. And then he could not share that spotlight with Adam alayhi salam, right? Yeah. नहीं भाई ये तो मेरा, you know, I've earned this is mine, ये मेरी जागीर है, whatever, right? This is my birthright. So he couldn't handle that one sajda, right? Yeah. और वो एक सजदा जो है वो, you know, that's not strength, right? It's just his downfall. Agreed. I got another myth for you. Mm-hmm. So if people feel threatened, that's their problem. So, देखो, if people feel threatened, ये उनका भी इशू हो सकता है, right? But अगर हर कमरे में हर जगह people start feeling threatened, then that means कि भाई कहीं तो पैटर्न कोई चेंज करने वाला है आपके अंदर. बिल्कुल. So empathy and self-worth, they're not opposites. You can hold them both. They can coexist. Right. So, you know, recently मैं सोच रहा था इस बारे में, like confidence जो है ना वो uplift करता है, arrogance जो है ना वो isolate करता है. Facts, right there. Yeah. और जब हम truly confident होते हैं ना, तो लोग हमसे खुल के बात करते हैं, right? That's true. जब हम arrogant होते हैं तो लोगों का energy shift हो जाता है, right? And लोग हमसे, you know, they shrink back. They like, नहीं यार कोई मसला है, Yeah. right? So आप अपने relationships में देखें, लोग आपसे किस तरह मिल रहे हैं, right? कितना खुल के मिल रहे हैं. And if, you know, people are genuinely afraid to sort of, you know, speak up against you or speak up in front of you, not against you, तो फिर then there's something seriously wrong. Yeah, absolutely. अच्छा, सोचने की बात है तो मैंने भी जरा कुछ इस पर गौर फिक्र किया और मुझे ख्याल ही आया कि humility is not equal to soft words. Someone once told me, Ali, that you're not humble because you speak softly. And it's actually quite the opposite. You're humble because when people can point out that you're wrong and you're open to accept that you can be wrong, that's when you're humble. When you can accept and acknowledge that you too can be wrong sometimes. Right. Oh, mic drop नहीं कर सकता, but that is a mic drop moment, right? देखिए जो लोग स्माइल करते हैं मगर उनकी आंखों से लग रहा था कि मैं तो सही हूँ, right? बहुत देखे ऐसे, right? Yeah. So you know, definitely we don't want that. अच्छा, कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, और जो एरोगेंस कहता है ना वो कहता है सिर्फ मैं वैल्यूएबल हूँ. Yeah. Right? Yeah. So wow. When you are getting that feeling कि मेरे बगैर ये नहीं हो सकता, तो याद रखें कि कब्रिस्तान जो है ना ऐसे बहुत सारे लोगों से भरे हुए हैं जिनके बगैर आज भी दुनिया चल रही है, लेकिन उनको लगता था कि नहीं चलेगी. Right? इसी बात से कनेक्टेड है शुक्र वर्सेस आपकी ईगो.
तो शुक्र और एरोगेंस जो है ना, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दे कैन बी टुगेदर. ठीक है. और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपको अल्लाह से डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो it's probably ego and it's not growth. This is something you should really think about, and you really need to figure this out. What's really happening? Right. और आप फतेह मक्का का इंसिडेंट देखेंगे ना, तो the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even though he entered as a conqueror, but उनका सर झुका हुआ था humility में, right? You know, there was no, you know, we have overcome, you know, here come the champions kind of, वो, you know, वो नहीं चल रहा. It was like, you know, just बहुत ही नरमी से, बहुत ही आजिज़ी से इंसान एंटर हुआ, right? And then he, you know, obviously it was an army, you know, but you know, he gave a open all कि भाई, you know, सबको open amnesty है, those who wish to take it, right? There were a few people that were not on the list, but you know, those were preordained kind of decisions. अच्छा जी, तो कुछ questions. बिल्कुल. और जो सवाल हमारे पास आए हैं, you know that I love the questions that we get. और पहला सवाल, मेरा पहला सवाल है आपसे. जी. आप किसी के मेहमान नहीं हैं और आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपने जिसका जवाब देना है. How do I know if I'm being confident or arrogant? Okay. So अपनी एनर्जी चेक करो. क्या तुम ग्राउंडेड हो या अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बड़ा पीसफुल फील करता है. एरोगेंस जो है ना, वो एक परफॉर्मेंस की तरह चलता है. Exactly. दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि do people feel safe after engaging with you, just like Ali pointed out earlier? Can they talk to you, open up to you, or do you make them feel smaller? And the spiritual check is that, is this a blessing that you're grateful for, या एक मेडल है जिसको आप जो है ना, वो आपको ये लगता है कि आपने अकेले अपने बलबूते पे सब कुछ अर्न किया. अच्छा, I got a question for you. I was underconfident for years. Now I feel that I'm overdoing it. Is that normal? Oh boy, yes, absolutely. The swing is part of the healing process. ठीक है. और ये जो trauma है ना आपका, तो ये जो आपका pendulum है ना, ये इसको flip करता रहता है. ठीक है. कभी आपको लगेगा कि आप बिल्कुल you're voiceless and you have nothing to say, or you have a lot to say but your voice does not support it. और कभी जो है ना, you will be overly loud. So both are very normal and both are totally okay. You will stabilize. It's going to take some time, but remember this. Awareness is the first step to everything. Right. So keep it real. Value over volume. बिल्कुल, absolutely, absolutely. अच्छा जी, क्योंकि mostly हमारे podcast में Ali, I prefer you, you know, when it's hadith or anything else, बिल्कुल religious, क्योंकि your Arabic pronunciation, mashallah, is brilliant. And अक्सर उर्दू के कुछ लफ्ज़ रखे होते हैं जो मैं सही नहीं पढ़ पाती. So I have a religious question for you. ठीक है. Islamically, how do we stay humble while still owning success? That's a brilliant question. Oh, it is. देखिए, success it means that, right? ये आपकी actual worth है, right? अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको एक टूल के तौर पे दी. आपकी आइडेंटिटी नहीं है सक्सेस, राइट? इट्स जस्ट ए पाथवे यू आर. सो अपने आप को हर वक्त रिमाइंड ये करें कि यू आर द वेसल, नॉट द सोर्स, राइट? यू आर नॉट द सक्सेस, राइट? ये अल्लाह सुब्हान तआला की एक दीवी चीज है, राइट? You have to work hard for it, right? No doubt about it. You have to work hard to maintain it also. But gratitude add करो अपने wins, right? और पता है, always have someone in your life who keeps it real with you. जो आपको, you know, who calls out your crap. Right now? नहीं, okay. You're amazing, mashallah. The only thing that I would like to add to what Ali has said, and Ali has said some really valuable stuff right here. Make dua. कि अल्लाह
आपको जो है ना वो grounded रखे, even when he elevates you. So the more you get, be grateful, but make sure that you're constantly making this dua to be grounded. Amazing. अच्छा, so let's do some practical tips. बिल्कुल, Right? बिल्कुल. हमारे practical steps क्या होने चाहिए? Regulate before you respond. ठीक है? अगर तुम्हारा first instinct ये होता है कि मैं उनको दिखा दूंगा, right? Please don't. Right? Before you speak, react, post, whatever, कोई भी चीज करनी है, पहले अपना nervous system जरा check करो. काम हो, charged हो, express कर रहे हो, perform कर रहे हो, real confidence जो होता है ना, वो तालियां बजाता नहीं, right? It just knows कि भाई when you need to breathe, pause, और power play की बजाय peace होना चाहिए, right? एक अंदर की सुकून आनी चाहिए. Yeah. Or I think most arrogance is basically a dysregulated fight response dressed as dominance. Right. अच्छा, चलिए second tip है जी कि say alhamdulillah but with feeling, दिल से कहें. Gratitude isn't just manners, ठीक है? It's a mirror जहाँ पे you get to see exactly what is happening. It's a reflection, right? So when you win, shine, or you grow, whatever it is that you're doing, pause and say alhamdulillah dil se, loudly in your heart, or like you mean it. और ये एक ऐसी बात नहीं कि you're pretending to be humble या आपने किसी को दिखाना है या कोई ऐसी बात है. It's just remembering that you're not the source. Like Ali pointed out earlier, you're not the source, and shukr is what turns success from self-worship to soul work. ये दो चीजें जो आपको याद रखें. Right. और लोगों के साथ भी gratitude show करना बहुत जरूरी है. Because the Prophet ﷺ said, whoever does not thank the people does not thank Allah. Right? यानी कि देखो आपकी सक्सेस में आप अकेले नहीं, right? बहुत सारे factors, and so you have to acknowledge that with humility, right? वो I hate that phrase. I'm a self-made man. Exactly. तो क्या मतलब है? सारी मेहनत तो मैंने किया. हाँ, right? मतलब 100 लोग और भी तो साथ में थे ना, right? हाँ, कहाँ थे? Right? कहाँ थे? वो पीछे थे, तुम्हें धक्का दे रहे थे ताकि तुम गिरे ना. Exactly. Right? So ये है. अच्छा, so जैसे मैंने पहले कहा ना, keep someone with you who calls you out for your, shortcomings. Whether it's a spiritual mentor, whether it's a, career में लोग mentors रखते हैं. And I was listening to an interview with a friend of mine, Imran, and उसने मुझे कहा, मतलब in that interview he said that हमारे जो mentors हैं ना, he said if I did not have mentors, मेरा career तो कब का पीछे छोड़ दिया होता मैंने ना, right? At all steps I chose good mentors, and those mentors really guided me. Alhamdulillah. Because और पता है, एक अच्छी बीवी या husband also acts as a good, sort of meter for you. Yeah. Because उसका काम ये होता है कि बोलना देखें सब तो आपकी बाबा कर रहे हैं, right? इतने भी आप हैं नहीं, right? But seriously, I mean, jokes apart, behind every successful man is a woman, right? Behind every successful woman is a man, whatever, right? वो इसलिए है कि वहाँ पे जो support होता है घर में, the Prophet ﷺ, when he started his mission, वही पहली बार आई तो वो घबरा गए. Like, क्या हो रहा है? So he comes home, कहीं और नहीं गए, दोस्तों के पास नहीं गए, right? He comes home, covers himself, and he seeks comfort in his wife. कि भाई मुझे cover करो, I don't know what's going on. She was the first support he reached out to. He did not reach out to his best friend, right? He did not reach out to someone in the market जो trade करते थे वो उनके साथ नहीं. He went home. आप अपने घर जा सकते हैं और अपनी vulnerability show कर सकते हैं. Check it. That's a very thought-provoking
Like, I'm not going to say anything further, but think about it. That was very deep. Basically, Ali, I think at the end of the day, आपकी hype friends से ज़्यादा ना आपका जो है वो reality check वाले friends बहुत ज़रूरी है. Right. और ऐसे जनरली से vibe check होना चाहिए. Vibe check होना चाहिए जी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, don't seek applause. Seek impact. मेरी speech वाली हरकत नहीं करनी कि applause हो गया, I'll get noticed. Impact क्या है? How many people are affected in a good way by what you're doing? तो if they clap, that's great. बहुत अच्छी बात है. लेकिन कुछ सीखा उन्होंने, कुछ उन्होंने हासिल किया, कुछ आपकी किसी बात से उन्होंने कुछ retain किया है, कोई impact था. That's what matters more than the applause. So confidence जो है ना वो अली आपसे पूछते हैं, was I useful? ठीक है. और arrogance जो आपसे कहती है, was I noticed? Right. So there's a massive difference. And before you walk into any room, like I said, कि आप social media पे हो, आप किसी से बात करें, आप कहीं कोई स्पीच दे रहे हैं या आप कहीं भी कोई कंटेंट पोस्ट करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, when you're leading any space, ask, did I contribute or did I just take up space? Right. So shine करो मगर लोगों की आंखें जलाए बगैर. That's a good one. I like that line. Yeah. All right, Ali, तो challenge क्या है हमारा इस हफ्ते का? Okay, so अब next challenge जो हमारा होता है उसमें हम encourage आपसे ये करते हैं कि you do a challenge based on what we've discussed and then you post about it online. Yeah. Hashtag #UpNextChallenge, right? Although, frankly, people need to start doing these because these are very practical. Exactly. Right? Yeah. We need to start doing these also. Absolutely. Let's In start fact, today. let's do this challenge ourselves and post first. Let's do it. ठीक है? Yeah. Okay. याद दिला दो. बिल्कुल. All right. So this week, notice one situation जहाँ आपकी instinct कहती है कि I need to stand out. ठीक है? Pause करो, script को flip कर दो और अपने आप से पूछो कि भाई मैं यहाँ पे value कैसे add कर सकता हूँ instead of just being visible. Whether it's in a meeting, whether it's social media, whether it's hanging out with your friends, meaning के साथ lead करो, not being the main character of the show, right? Absolutely. Or at the end of the week, journal this, yeah, even share this on social media if you want to. Yeah. Did the space feel lighter? Yeah. Did you feel more you, right? Yeah. Authenticity over there. Authenticity, exactly. Yeah. So tag it with Up Next Challenge. Yeah. Right. And we'll go through your comments. We'll see what you've written, and we'll, I mean, we would love to see what you're doing and how this impacted you and what challenge you took up and where you noticed. And if you're growing, trust me, we'd be more than happy to see that happen. So, हमने सीन से क्या सीखा इस पूरी गुफ्तगू से? अच्छा, so as we wrap up this episode, Mariam, याद रखो कि confidence जो है ना वो अल्लाह सुब्हान तआला की लाइट में चलना है, अपनी स्पॉटलाइट में नहीं चलना, ठीक है? वो arrogance है. So remember that self-worth rooted in service will always outlast your self-importance. और दोनों के बीच में बहुत पतली सी लाइन, right? A thin line. A very thin line. But your soul always knows. So, thank you for joining us for another episode of Up Next Kia. If this made you pause, smile, think, share karo yaar. Yeah. Right? Someone else probably needs a reminder too. Yeah, the best part about commenting or sharing your stories is that somebody else is always getting inspired or learning from you. So don't stop this chain. दिए से दिए को जलाए रखने वाला जो सिलसिला है, आप उसको जारी रखें और बताएं. And comment your feedback, suggest what topics you would like us to cover, and send us your question if you want answers to something that is bothering you or you're really inquisitive about something. And what we do with the questions that we get, because people don't know what we're going to talk about on the next episode, right? So हम question लेते हैं, we fit it in according to the the topic, and sometimes we make the topics around the questions also. Right? Yeah. So write in with your questions. upnextkia@gmail.com, Instagram पे भेजो, Facebook पे भेजो, YouTube पे comment करो, and don't forget to always ask Up Next Kia.